So hello dear students, welcome back to Political Science YouTube channel. तो पिला माने आजिर भिडियो आम डिस्कसन करवा तुमर +3 फर्स्ट सेमिस्टर रे जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स अच्छी ताहार कोर पेपर 2 जो तुमर अच्छी इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फर्स्ट सेमिस्टर ताहार आम बहुत गुड़ाए मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन गुड़ाक डिस्कसन आज करवा जहाँकि तुम सेमिस्टर एग्जाम बहुत इंपोर्टेंट अटे ता छड़ा अन्यान्य गवर्नमेंट एग्जाम इंडियन पॉलिटी यही एमसीक्यू सीरीजटा बहुत इंपोर्टेंस रखिबो एवं यार जो तुम एमसीक्यू अच्छी यह गोटे क्वेश्चन बैंक गोटे जो तुम अराउंड 500 एमसीक्यू एठार तुम पाइपर जहाँकि आम पार्ट वाइज ताकू डिस्कसन करवा तो चलतु वीडियो को स्टार्ट करवा किंतु ता पूर्व रखा चाहे जे वीडियो जो भल लगा वीडियो को लाइक करेंगे चैनल टी सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे तो चलतु वीडियो को स्टार्ट करवा। तो चलतु तुम तो फर्स्ट क्वेश्चन हो who is known as the father of Indian Constitution? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो यार सठिक उत्तर हो तुम कौन जे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो। सेकेंड क्वेश्चन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड ऑन ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1950। तो यार सठिक उत्तर हो तुम कौन ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन deals with the fundamental rights? ऑप्शन ए पार्ट 2, ऑप्शन बी पार्ट 3, ऑप्शन सी पार्ट 4 या ऑप्शन डी पार्ट 5। तो सठिक आंसर हम तुम कौन ना पार्ट 3। पार्ट 3 ही तुम फंडामेंटाल राइट्स अच्छी एवं आमर फंडामेंटाल राइट्स केते अच्छी पिला माने आमर अच्छी फंडामेंटाल राइट्स 6टी फंडामेंटाल राइट्स अच्छी है एवं जो आर्टिकल कथा आम देखा फंडामेंटाल राइट्स तुम आर्टिकल 12 रु 35 मध्य ही अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1950, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1947। तो करेक्ट आंसर इज 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 22। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी फेडरल सिस्टम, ऑप्शन सी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो देखो हमको जेहेतु नॉट पचारि तो यार सठिक उत्तर हो तुम कौन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हो बाकी तीनोटी तुम हूँ तुम फीचर्स रे जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली हैड हाउ मेनी आर्टिकल्स? ऑप्शन ए 395, ऑप्शन बी 308, सी 400, डी 420।
तो सठिक उत्तर तुम कौन ना ऑप्शन ए 395. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the longest constitution in the world? Option A US, option B Canada, option C India, option D Switzerland. The correct answer is India, option C. Next questions, the first president of India was option A Jawaharlal Nehru, option B Rajendra Prasad, option C Dr. B.R. Ambedkar, option D सरदार वल्लभ भाई पटेल. तो तुम सठिक उत्तर हे कौन ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होती तुम भारत प्रथम राष्ट्रपति. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू इक्वालिटी. पे जान आमर जो फंडामेंटाल राइट्स 6टी अच्छी से 6टी मध्य तुम राइट टू इक्वालिटी हूँ गोटे. तो यार आर्टिकल क्योंटी बा क्यों आर्टिकल यहाँ मेंशन कराई देख ऑप्शन अच्छी ये तुम आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32, आर्टिकल 19. तो यार सठिक उत्तर है तुम कौन यार सठिक उत्तर है तुम आर्टिकल 14 एवं राइट टू इक्वालिटी तुम जो अच्छी यह 14 रु 18 मध्य ही अच्छी तुम आर्टिकल. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड द अथॉरिटी टू एमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ऑप्शन ए पार्लियामेंट, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी यूनियन कैबिनेट. तो यार सठिक उत्तर है तुम ऑप्शन ए पार्लियामेंट बा संसद. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन ए प्रेसिडेंट राज्यसभा लोकसभा, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट एंड लोकसभा, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा लोकसभा, ऑप्शन डी प्रेसिडेंट कैबिनेट राज्यसभा. तो सठिक उत्तर होची तुम ऑप्शन ए प्रेसिडेंट राज्यसभा और लोकसभा को नहीं ही आमर पार्लियामेंटा गठन बा गठित. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. जो तुम जुरिस्डिक्शन अच्छी ताकि क्यों आर्टिकल डिस्क्राइब कराई. ऑप्शन ए 124, ऑप्शन बी 130, ऑप्शन सी 131, ऑप्शन डी 138. तो यार राइट आंसर है आर्टिकल 124. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जहाँ को आम डीपीएसपी कही था आर ऑप्शन ए जस्टिसेबल, ऑप्शन बी नॉन जस्टिसेबल, ऑप्शन सी एनफोर्सेबल बाय लॉ, ऑप्शन डी नॉन एनफोर्सेबल बाय लॉ. तो यार सठिक उत्तर है तुम कौन ऑप्शन बी नॉन जस्टिसेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of the Indian Constitution deals with abolition of untouchability. Untouchability क्यों आर्टिकल मेंशन कराई आम जो छुआ छुआ भेदभाव कही था. आर्टिकल 17, ऑप्शन ए आर्टिकल बी आर्टिकल 14, ऑप्शन सी आर्टिकल 21, ऑप्शन डी आर्टिकल 18. तो यार राइट आंसर है तुम ऑप्शन ए 17. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a fundamental duty under the Indian Constitution. Option A to vote in election, option B to promote harmony, option C to pay taxes, option D to follow rules of society. तो यार सठिक उत्तर है तुम ऑप्शन बी टू प्रमोट हार्मोनी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ए सिस्टम ऑफ यूनिक कैमरा लेजिस्लेचर, बाई कैमरा लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, मोनार्की. तो करेक्ट आंसर ये तुम कौन बाई कैमरा लेजिस्लेचर. बाई कैमरा लेजिस्लेचर अर्थात तुम दुई सदन व्यवस्था को कहुच्छी जो तुम लोकसभा अच्छी पार्लियामेंट 2टा सदन और राज्यसभा अच्छी. लोकसभा हूँ तुम लोअर हाउस एवं राज्यसभा तुम अपर हाउस बा उच्च सदन बोली कहुए. नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ तुम व्हिच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट. ऑप्शन ए फर्स्ट शेड्यूल, ऑप्शन बी सेकंड शेड्यूल, ऑप्शन सी थर्ड शेड्यूल, ऑप्शन डी फोर्थ शेड्यूल. तो करेक्ट आंसर है तुम ऑप्शन फोर्थ शेड्यूल. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड. इम्पीच्ड अर्थ हूँ बहिष्कार करवाटा अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ऑप्शन ए आर्टिकल 61, ऑप्शन बी आर्टिकल 56, ऑप्शन सी आर्टिकल 65, ऑप्शन डी आर्टिकल 75. तो सठिक उत्तर है तुम कौन ऑप्शन ए आर्टिकल 61 हो. अर्थात आर्टिकल 61 कौन अच्छी प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट
रही बहिष्कार पद्धति रही। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन guarantee the right to life and personal liberty? ऑप्शन ए आर्टिकल 21, ऑप्शन बी आर्टिकल 19, ऑप्शन सी आर्टिकल 14 एवं ऑप्शन डी आर्टिकल 15। तो यार सठिक उत्तर तुम आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी हाउसेस? पार्लियामेंट केतटा हाउस अच्छे संसद केतटा गृह अच्छे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 2। दुईटा हाउस अच्छे, गोटे लोकसभा आ गोटे राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान लक्षण क्योंकि नुहे? ऑप्शन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम, ऑप्शन बी फेडरल सिस्टम विथ ए यूनिटरी बायस, ऑप्शन सी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी मल्टी पार्टी सिस्टम। द करेक्ट आंसर इज मल्टी पार्टी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज? ऑप्शन ए आर्टिकल 29, ऑप्शन बी आर्टिकल 30, ऑप्शन सी आर्टिकल 31, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। सो द करेक्ट आंसर हो तुम बोथ ए एंड बी आर्टिकल, अर्थात आर्टिकल 29 एवं आर्टिकल 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ सेकुलर स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडेड बाय द ऑप्शन ए 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 44 अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 52 अमेंडमेंट कि ऑप्शन डी 62 अमेंडमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 42 अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पावर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? ऑप्शन ए लेजिस्लेटिव पावर, ऑप्शन बी एग्जीक्यूटिव पावर, ऑप्शन सी जुडिशियल पावर, ऑप्शन डी फाइनेंशियल पावर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी जुडिशियल पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द फंडामेंटल राइट्स ऑन द पार्ट 3 of the Indian Constitution? ऑप्शन ए राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन बी राइट टू फ्रीडम, ऑप्शन सी राइट टू प्रॉपर्टी, ऑप्शन डी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सो द करेक्ट आंसर इज राइट टू प्रॉपर्टी, जहाँकि तुम डिलीट करा जाइथिला फंडामेंटल राइट्स रो। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विथ द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19। सो करेक्ट आंसर ये बताओ आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? जो तुम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अच्छा ताको अपॉइंट किए करते नियुक्ति किए करते सुप्रीम कोर्ट कह। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी पार्लियामेंट, ऑप्शन डी द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजिज्म। सो द करेक्ट आंसर इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 44 अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 52 अमेंडमेंट एंड ऑप्शन डी 73 अमेंडमेंट। तो द करेक्ट आंसर इज 42nd अमेंडमेंट हूँ तुम करेक्ट आंसर, जहाँ को आम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कही था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कही था 42nd अमेंडमेंट को, जहाँकि तुम 1976 रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी? जातीय जरूरीकालीन परिस्थितिर आर्टिकल केते बोली पचरा जाउछि क्वेश्चन रे। ऑप्शन ए 352, ऑप्शन बी 356, ऑप्शन सी 360, ऑप्शन डी 370। तो यार करेक्ट आंसर हो तुम ऑप्शन ए 352। अच्छा, इंडिया रे तुम तीनोटी इमरजेंसी अच्छी, गोटे हूँ नेशनल इमरजेंसी, गोटे स्टेट इमरजेंसी एवं गोटे फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल आम जाना 352, स्टेट इमरजेंसी तुम 356 एवं फाइनेंशियल तुम 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ अमेंडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ऑप्शन बी स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ऑप्शन सी रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑल स्टेट्स, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ बी एंड सी हो, अर्थात बोथ सिंपल मेजॉरिटी
प्लस स्पेशल मेजोरिटी मध्य आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स? ऑप्शन ए 245 आर्टिकल, ऑप्शन बी आर्टिकल 248, ऑप्शन सी आर्टिकल 249 एवं ऑप्शन डी आर्टिकल 256। सो द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 245। नेक्स्ट क्वेश्चंस, which of the following is a features of Indian constitution? Option A single citizenship, option B dual citizenship, option C rigid and unitary system, option D unwritten constitution. So the correct answer is single citizenship বা একক নাগরিকতা। Next questions, the Indian constitution borrowed the idea of DPSP from which country constitution? বা DPSP जो आमर थिला आमे केउ कंट्री रो बोरोड करथिला? ऑप्शन ए यूएस, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन डी कनाडा। तो सठिक आंसर हो तुम आयरलैंड रो आमे बोरोड करथिला, आयरलैंड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने, अच्छा पिला माने ता पूर्व समस्त वीडियो को लाइक कर दियो, शेयर कर दियो एवं चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियो, जहाँ द्वारा तुम भी यही परिवार सदस्य हो पार। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स राइट टू इनफॉरमेशन अर्थात RTI राइट टू इनफॉरमेशन सूचना रो अधिकार जो अच्छे? आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, आर्टिकल 15, आर्टिकल ऑप्शन डी हो राइट टू इनफॉरमेशन एक्ट नॉट ए पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी राइट टू इनफॉरमेशन एक्ट नॉट ए पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चंस, which of the part of the Indian constitution deals with organization of the union and its territory? Option A part 1, option B part 2, option C part 3, option D part 4. So the correct answer is option A part 1. Next questions, which article of the Indian constitution guarantee the protection of rights regarding freedom of speech and expression? Option A article 19, option B article 21, ऑप्शन सी आर्टिकल 15, ऑप्शन डी आर्टिकल 18। सो द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 19। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, यूके बा यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। सो द करेक्ट आंसर इज तुम यूएस आम बोरोड माने आनी फेडरल स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चंस, which of the following is a union territory under the Indian constitution? Option A Jammu and Kashmir, option B Lakshadweep, next option C Goa, option D Himachal Pradesh। तो सठिक उत्तर हो तुम ऑप्शन बी लाक्षाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द राज्यसभा इज ऑप्शन ए इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, ऑप्शन बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑप्शन डी नॉट ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। सो द करेक्ट आंसर हो तुम ऑप्शन सी इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हु इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो सठिक उत्तर हम तुम कौन? ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द प्रोविजन फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए सरकारिया कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द फेडरल सिस्टम इज फाउंड इन? ऑप्शन ए 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 44th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी 52 अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन डी 73 अमेंडमेंट एक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 42nd अमेंडमेंट ये तुम जो 1976 रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडमेंट बाय? ऑप्शन ए सैंपल मेजोरिटी, ऑप्शन बी स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन सी रेक्टिफिकेशन बाय द स्टेट्स, ऑप्शन डी बोथ ए बी एंड सी। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ बी एंड सी, सिंपल मेजोरिटी एज वेल एज स्पेशल मेजोरिटी दरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अमेंडमेंट प्रोसीजर? हम जो संशोधन प्रणाली अच्छे क्यों धारा अच्छे? ऑप्शन ए आर्टिकल 368, ऑप्शन बी आर्टिकल 352,
ऑप्शन सी आर्टिकल 356, ऑप्शन 4 बटे आर्टिकल 375। सो द करेक्ट आंसर हो तुम आर्टिकल ए 368 ही तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया? ऑप्शन ए आर्टिकल 29, ऑप्शन बी आर्टिकल 30, ऑप्शन सी आर्टिकल 31, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अर्थात आर्टिकल 29 प्लस 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय ऑप्शन ए डायरेक्ट इलेक्शन बाय द पीपल, indirect election by the member of parliament, option C indirect election by an electoral college, option D appointment by the prime minister. So the correct answer is option C indirect election by an electoral college. Next questions, which of the following is a source of Indian constitution? Option A statutory law of the British Parliament, option B the Government of Indian Act 1935, option C the Constitution of the US, option D all the above. So the correct answer is all the above. Next questions, what is the maximum term of the Lok Sabha? Option A 4 years, option B 5 years, option C 6 years, option D 7 years. So the correct answer is option B 5 years. Next questions, who appoints the governor of state in India? Option A the President of India, option B the Prime Minister of India, option C the Chief Justice of India, option D the Council of Ministers. So the correct answer is option A the President of India. Next questions, the idea of Constituent Assembly for India was first proposed by option A the Indian National Congress, option B the Government of Indian Act 1935, option C the Cripps Mission 1942, option D the Cabinet Mission Plan 1946. So the correct answer is option D the Cabinet Mission Plan 1946. Next questions, who was the first woman to become the President of Indian National Congress? Option A Sarojini Naidu, option B Indira Gandhi, option C Ani Besant, option D Kamala Devi Chattopadhyay. So the correct answer is option C Ani Besant. Next questions, which article of the Indian Constitution empower the Parliament to make laws on the matter of union list? Option A Article 245, option B Article 246, Article C Article 247, option D Article 248. So the correct answer is option B Article 246. Next question, who presides over meetings of the Lok Sabha? Option A President of India, option B Vice President of India, option C Speaker of the Lok Sabha, option D Prime Minister of India. So the correct answer is option C Speaker of the Lok Sabha. Next questions, in which year was the Constitution of India amendment for the first time? Option A 1951, option B 1952, option C 1950s, option D 1960. So the correct answer is 1951. Next questions, the Constitution of India defined India as a federal union, unitary states, sovereign socialist secular democratic republic. So the correct answer is option D sovereign socialist secular democratic republic. Next questions, which of the following rights is available to the Indian citizen under Article 21 of the Indian Constitution? Option A right to property, option B right to freedom of speech, option C right to life and personal liberty, option D right to equality. So the correct answer is option C right to life and personal liberty. Next questions, to provision for right to education for the children between 6 and 14 years of age was added to the Indian Constitution by Article option A 86th Amendment Act 2002, option B 42nd Amendment Act 1976, option C 44 Amendment Act 1978, option D 52 Amendment Act 1985. So the correct answer is option A
86th Amendment Act 2002. Next questions. Which of the following is not a fundamental duties under the Indian Constitution? Option A. To protect the environment. Option B. To promote harmony and the spirit of common brotherhood. Option C. To protect the sovereignty, unity and integrity of the India. Option D. To pay taxes of the government. So the correct answer is to pay taxes to the government. Next questions. Which of the following articles deals with the procedure for the removal of the President of India? Option A. Article 58. Option B. Article 61. Option C. Article 72. Option D. Article 78. So the correct answer is option B. Article 61. Next questions. Which of the following is an example of the concurrent list subject under the Indian Constitution? Option A. Defense. Option B. Education. Option C. Police. Option D. Forest. So the correct answer is option B. Education. देखो पे आमर जो लिस्ट अच्छी तीनो लिस्ट अच्छी तुम गोटे यूनियन लिस्ट गोटे स्टेट लिस्ट गोटे कनकरेंट लिस्ट सो यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट अच्छी बर्तमान 100 स्टेट लिस्ट से सब्जेक्ट अच्छी तुम 61 कनकरेंट अच्छी तुम 52 तो यूनियन लिस्ट जो सब्जेक्ट अच्छी से तुम सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ तैयारी करती स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट मान तुम स्टेट गवर्नमेंट लॉ तैयारी करती और कनकरेंट लिस्ट जो सब्जेक्ट अच्छी से तुम बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट मिसिक से आईन तैयारी करते. नेक्स्ट क्वेश्चंस. Which of the following is not a power of the President of India? Option A. To declare war. Option B. To grant pardon. Option C. To dissolve the Lok Sabha. Option D. To appoint the Prime Minister. तो करेक्ट आंसर ये बताऊँ ऑप्शन सी टू dissolve the Lok Sabha. To dissolve the Lok Sabha. Next questions. The Indian Constitution guarantee the right to vote to the citizen under Article 1. Option A. Article 1 is. Option B. Article 32. Option C. Article 326. Option D. Article 14. तो यार सठिक उत्तर जो तुम ऑप्शन सी आर्टिकल 326. नेक्स्ट क्वेश्चन. In India, the power to amend the constitution is vested in option A. The president. Option B. The parliament. Option C. The supreme court. Option D. The parliament and state legislature. सठिक उत्तर है तुम्हारा the parliament. Option B. Next questions. Which article provide for the power of parliament to make law for the whole or any part of the India? Article 246, Article 247, Article 248, Article 249. तो करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा कौन? Article 246. Next questions. The President of India can take decision in any emergency situation under which article of the Indian Constitution? ऑप्शन ए आर्टिकल 352, ऑप्शन बी आर्टिकल 368, ऑप्शन सी आर्टिकल 370, ऑप्शन डी आर्टिकल 356. तो यार सठिक उत्तर होगा तुम्हारा ऑप्शन ए आर्टिकल 352. नेक्स्ट क्वेश्चंस. द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज ए. ऑप्शन ए सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ऑप्शन बी सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ऑप्शन सी सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ऑप्शन डी सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. तो यार सठिक उत्तर जो तुम्हारा ऑप्शन बी सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. नेक्स्ट क्वेश्चंस. व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन मैटर इन द यूनियन लिस्ट? ऑप्शन ए आर्टिकल 246, ऑप्शन बी आर्टिकल 247, ऑप्शन सी आर्टिकल 248, ऑप्शन डी आर्टिकल 249. तो यार सठिक उत्तर होगा तुम्हारा ऑप्शन ए आर्टिकल 246. नेक्स्ट क्वेश्चंस. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द फंक्शन ऑफ Council of Ministers in India? Option A to enact law. Option B to formulate policy for the government. Option B to interpret laws. Option D to conduct election. So the correct answer is option B to formulate policies for the government. Next question. Who was the first Chief Justice of India? Option A Justice M. Patanjali Shastri. ऑप्शन बी जस्टिस हीरालाल जी की सुंदर कन्या. ऑप्शन सी जस्टिस बी एन श्री कृष्ण.
ऑप्शन डी वाई डू चंद्रचूड़। सो द करेक्ट आंसर इज जस्टिस हरिलाल जे कि सुंदास कानिया, जहाँ आम एच जी कानिया बोली कही था सर्टकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म जुडिशियल रिव्यू मेंशन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल के ऑप्शन ए आर्टिकल 13, ऑप्शन बी आर्टिकल 32, ऑप्शन सी आर्टिकल 137, ऑप्शन डी आर्टिकल 368। तो करेक्ट आंसर है तुम आर्टिकल 13 ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द टर्म ऑफिस ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया इज ऑप्शन ए 5 years, ऑप्शन बी 6 years, ऑप्शन सी 4 years, ऑप्शन डी 5 रिन्यूएबल। आंसर है तुम 5 years ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a fundamental rights under the Indian Constitution? Option A right to property, option B right to equality, option C right to vote, option D right to work। करेक्ट आंसर है तुम्हारा ऑप्शन बी राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज ए फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम ऑप्शन ए यूएस, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम by UK। Next questions, who has the authority to appoint the Comptroller and Auditor General of India, जहाँ को हमें CAG बोली कहते हैं। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो यार सठिक उत्तर तुम ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो तुम CAG अच्छा CAG आर्टिकल तुम आर्टिकल 148 मन रखी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, under which article of the Indian Constitution provide for the establishment of a finance commission? आर्टिकल 280, आर्टिकल 350, आर्टिकल 368, आर्टिकल 247। तो करेक्ट आंसर है तुम्हारा ऑप्शन ए आर्टिकल 280। नेक्स्ट, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इनकॉर्पोरेटेड इन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए पार्ट 3, ऑप्शन बी पार्ट 4, ऑप्शन सी पार्ट 4A, ऑप्शन डी पार्ट 5। करेक्ट आंसर है तुम्हारा कौन? ऑप्शन सी पार्ट 4A। In which case did the Supreme Court of India declare basic structure of the Constitution? Option A Goloknath versus State of Punjab, option B Kesavananda Bharati versus State of Kerala, option C Minerva Mills versus Union of India, option D Menoka Gandhi versus Union of India। So the correct answer is option B Kesavananda Bharati versus State of Kerala। Who was the chairman of Constituent Assembly of India? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो करेक्ट आंसर है तुम्हारा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 35 years, ऑप्शन डी 40 years। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 35 years। तो यह आज तुम MCQ सीरीज पार्ट 1 एवं कहार केते स्कोर रहा पे तुम कमेंट बॉक्स निहाती जनइब एवं यार सेकेंड पार्ट आम पुणी आनिबा जदि तुम मैंने जो दरकार ताहले कमेंट बॉक्स निहाती कह आर पार्ट दरकार कि नहीं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।